So that is the causes of inflation. Important, don't skip it, make sure you can answer all of these questions. उसके बाद consequences of inflation में again I have given you a few different categories, but I mean स्ट्रक्चर तो तुमने बेसिकली याद रखना है. इट्स द सेम दैट आई फॉलोड व्हेन आई टॉट यू अबाउट दिस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन. तो तुमने याद रखना है परचेजिंग पावर गिर जाती है हाउस होल्ड्स की. आई एम मिसिंग द स्पेलिंग्स. सो कॉन्सिक्वेंसेस में द परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड्स, it falls. That is very easy to explain. If you continue to earn the same amount of money every month but चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो we say your purchasing power, the amount of goods that you can buy, that will fall, and therefore your living standard will fall. तुम पहले से कम चीज़ें afford कर सकोगे. So that is the simple consequence, the simple harmful effect of inflation. उसके बाद we talked about redistribution of wealth, or I should say arbitrary redistribution of wealth, जहाँ पे हमने lender versus borrower की कहानी समझी थी कि lenders will lose out if there is inflation. And the problem that creates is that lenders, they will overall be discouraged to lend, and therefore lending activity will fall down in economy, और इसीलिए फिर investment भी कम होगी. Then we talked about these menu costs and these shoe leather costs of inflation. Menu cost, the cost of the time that is wasted in thinking about, deciding and coming up with new prices regularly because of inflation, and then advertising those prices and sort of damaging your customer relations. All of that are considered to be the menu costs of inflation. And shoe leather cost is when there is so much inflation that you are worried that whatever money you earn, you are worried that you have to either spend it or you have to convert it into some other asset such as US dollar or gold, because you don't want that money to lose value. So that again means that people will be wasting their time, that I have earned my income but then I have to go to a bank or maybe a jeweler or maybe some other financial advisor to sort of convert my money into something that is more stable, that is not losing value. So jitni inflation hogi, the greater will this problem be. So shoe leather cost ka again matlab ye hai ki I mean the time, the effort, the energy that people will waste every day, every month, just trying to save their money and convert it into some form that is not losing value. That is your shoe leather cost. उसके बाद we talked about external cost of inflation, जहाँ पे हमने external cost पहली inflation की क्या है कि your exports will fall since your products are becoming more expensive, and your imports will increase since Pakistani or local people, they will start buying from other countries. Together this means that your net export, this export minus import, that will decrease क्योंकि export कम हो रही है, import बढ़ रही है. So overall export minus import will decrease. Now export minus import, this balance is also known as country's trade balance. So जब inflation होती है, your net exports fall, that is your trade balance worsens, it can go into a deficit meaning it becomes negative. And again ये अभी तुम्हें रट्टा लगाना पड़ेगा when we talk about trade and exchange rate, तो ये चीज़ clear हो जाएगी कि when trade deficit falls, they start putting pressure on your exchange rate to depreciate. So this is the external consequence. Simple direct reason or way of explaining this is Pakistani products or whichever country you are thinking about, अगर inflation है, your products will be expensive, foreigners won't buy them, and your local people, they will also start looking for imported alternatives. So your trade balance of the country will worsen, it will go into a deficit, which in turn can start putting pressure on the country's exchange rate to depreciate. एक आसान external consequence is that if there is more inflation, if things are becoming more expensive, then foreigners will be discouraged to invest in your country. So you can say inflation will discourage foreign investment. And overall also remember, अगर मुल्क में inflation हो when you are thinking about investing globally or moving to a new country, then the greater the amount of inflation in a country, the more sort of unstable or more risky that country is considered, and therefore overall people they lose confidence in your economy, in your country's economy. So ये तुम्हारा external consequence है. And lastly I told you about how sometimes extreme inflation can affect the functions of money. और इन सारी चीज़ों में
the most important small little thing on the side that I told you is that look, yes, these are all possible harmful consequences of inflation, but how bad and how intense they are, that depends on the amount or rate of inflation, as well as whether inflation is stable or unstable, or whether it is fluctuating, and thirdly whether it is anticipated or unanticipated. So those are some of the things that determine kitni harmful hogi inflation. Now the way you answer these questions, and let me just take this from here. कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन स्टॉप मी. आई एम गोइंग टू गो थ्रू दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो इन्फ्लेशन के क्वेश्चन को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है. समटाइम्स यू गेट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड? So the way you will answer this question is you will mention all of these harmful effects, and then you can say it in the end, okay, how harmful they are depends on the rate and so on and so forth. Or you can start your answer by saying that look, there are various different harmful consequences of inflation, but how bad they are, how serious they are, that depends on the rate, the stability, and the anticipated versus anticipated inflation thing. और उसके बाद एज यू गो थ्रू ईच इफेक्ट, ईच हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, साथ साथ बताते जाओ कि परचेजिंग पावर फॉल करेगी, बट ऑब्वियसली इफ़ इन्फ्लेशन इज़ जस्ट 1%, नॉट अ बिग डील, बट इफ़ इन्फ्लेशन इज़ 10, 15, 20%, देन दिस इफेक्ट ऑफ फॉलिंग परचेजिंग पावर बिकम्स सीरियस. ठीक है. इसी तरह डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन देम टू यू. क्वेश्चन स्पेसिफिकली उस पर आता है तो जस्ट सेम थिंग्स, बट जस्ट make two different paragraphs, one for external and one for domestic consequences. Now effects consumer पे ज़्यादा होता है या producer पे क्या ज़्यादा होता है? Let me get to these couple of questions and then I will explain to you how you are supposed to figure them out. और फिर आखिरी दो questions हैं deflation पे. This is where कीमतें जब कम हो रही होती हैं, I explained to you in the class, it is not always a good thing, and this is exactly the question the examiner will ask you. Should you be happy if there is inflation? Should you be happy if there is deflation? So ये सारे क्वेश्चन हैं. Let me take you through them. Let me put the basic sort of broad ideas that we have learned over here about the consequences of inflation, and let me now explain how we can use these to answer these questions. So पहला question over here is discuss there's so many errors today. Few need discuss the view. Discuss the view that inflation is always a major problem. So you repeat this thing. Inflation is a problem, but how big a problem it is depend on rate, stability, anticipated versus anticipated, and there can be a lot of problems. Purchasing power, batao, the greater the rate of inflation, the larger this problem. Redistribution of wealth, explain the usual ghisa pita rata apna, how that can be a problem, and then say that look, if the rate of inflation is too much, then this redistribution will be more, and therefore this will be a bigger problem. If the rate of inflation is unstable, then this is a real big problem. But if the rate of inflation is stable and anticipated, then when you are agreeing upon your lending and borrowing contracts, you can take into consideration that rate of inflation, and given it's stable, given it's anticipated, you can sort of overcome this negative effect of inflation. Menu costs, again explain the whole thing, what these costs are, and then मैंने तुम्हें कहा क्लास में जो 10 मिनट लगाए थे, don't forget them, don't just say कि अच्छा हाइपर इन्फ्लेशन हो तो ये मसला होता है. Give the real world example. The menu costs, they really are a problem when there are serious amounts of inflation, as they were in 1990s in the South American countries of Argentina and Bolivia, etc. Or you can, if you remember, give the example of the European countries of Germany and Austria after World War II. मैंने तुम्हें जो वो article भेजा था, I did it on purpose. कहीं ना कहीं you will be able to fit that example in these questions. So ये तुम्हारा, I mean, again, you can go through the other ones, effects on the functions of money. Again, I explained them to you in the class कि सबसे पहले store of value function effect होता है, because the more the inflation rate is, the quicker the money will start losing its value. It won't be a very good store of value. बहुत ही ज़्यादा inflation होती है तो money will start losing its function as a unit of account, and in the extreme cases, the money may end up losing its function of medium of exchange. This is where we say people
people will lose confidence in that money कि इतनी इन्फ्लेशन हो रही है कि 10 की चीज़ एकदम से 1000 की हो जाती है. So we are not going to deal in that local currency. So हम कहते हैं the whole system, the whole monetary system basically can collapse if there is hyperinflation and if people stop accepting the country's currency as a medium of exchange. So that would be your answer to discuss the view that inflation is always a major problem. पहले ये mention कर दो, because then as you go about explaining each of the possible negative effects, you can refer back to कि देखो रेट ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा harmful है, stable unstable हो तो ये कम harmful है, and so on and so forth. Now मैंने तुम्हें I told you one possibility where inflation, or you can say small amount of stable inflation, is actually good for the economy. Can anybody remember when is inflation good? Or you can say, how can inflation be good? Can anybody remember? याद है किसी को कि नहीं याद? नहीं है तो माइक खोल के बोलो नहीं याद. सर नहीं याद. ओके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यार. व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? हमने अभी भी बार बार ये बात रिपीट की है कि इफ़ यू आर इफ़ द इकोनॉमी इज सिटिंग मच बिलो कैपेसिटी एंड देन देयर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. रिमेंबर दिस ग्राफ. इफ़ यू आर सिटिंग मच बिलो कैपेसिटी and then there is demand pull inflation. So until you reach your potential, देखो, you are moving, your GDP is increasing quite a lot as your aggregate demand increases, but थोड़ी inflation हो रही है. So this is where we say that some amount of stable, anticipated, predictable inflation, जैसे मैं तुम्हें बताया था developed countries में 1.5-2%, 1.5-2% inflation is a norm every year. That is simply reflecting that look, aggregate demand is gradually increasing in that economy, which is a good sign. Aggregate demand increasing, think about it, we are just saying that 4 sectors, they want to buy more. So something good must be happening in the economy, that households or firms or government, they are all able to demand more things. नौकरियां मिल रही होंगी, तनख्वाहें लगी हुई होंगी, दैट इज़ वेयर वी से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है. सो ठीक है, थोड़ा प्राइस लेवल बढ़ रहा है, बट फर्म्स दे हैव इनफ कस्टमर्स एंड दे फॉर सम शॉप्स, सम बिजनेसेस, दे आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस. तो ठीक है, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इज़ फाइन, द इकोनॉमी इज़ एक्सपेंडिंग. As opposed to that, think of an economy जहाँ पे aggregate demand is exactly stagnant, aggregate supply is exactly stagnant. तुम बैठ के तालियां बजाओगे, price levels तो वहीं के वहीं हैं, but the problem with that is you have a stagnant economy. वहीं के वही जीडीपी, वही एम्प्लॉयमेंट, वही इनकम. बिजनेसेस जो 10 साल पहले एक ब्रांच थी वो आज भी एक ब्रांच है, जिसकी एक दुकान थी आज भी एक दुकान है. सो वी आर सेइंग इवन अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ नॉट अ गुड साइन. ओके, सो दैट इज़ वे वी से, हमेशा तुमने याद रखना है इन दिस क्वेश्चन ऑफ डिस्कस वेदर इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज बैड. दिस इज़ द कोर ऑफ योर आंसर, बट इन द एंड जस्ट थ्रो इन अ स्मॉल ग्राफ. ये वाला भी बना सकते हो, यू कैन मेक द सिंपल मोनेटरिस्ट वर्जन एज वेल. Sometimes stable, predictable and anticipated small amount of inflation is not bad, because small amount of demand pull inflation, it will be accompanied with an increase in GDP and an expanding economy. ठीक है, इसके बारे में any questions? Any questions on this? Okay, I will assume no questions. बाकी क्वेश्चन अगले इस कैटेगरी में, दे आर ऑल द सेम. डिस्कस वेदर इन्फ्लेशन इज नेसेसरीली हार्मफुल. इट्स एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मे बी बेनिफिशियल टू एन इकोनॉमी. नाउ अगेन इस क्वेश्चन में फिर से ना घबरा जाना कि ये तो सिर्फ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे है. दिस वर्ड मे बी, explain why a low stable rate of inflation may be beneficial to an economy. This may be is telling you, बताओ पहले वही घिसे पिटे harmful effects कि look, it can be harmful, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, but yes, low and stable ये मसले इतने नहीं होंगे, and maybe
It can be sometimes beneficial because low and stable, as I just explained. Aggregate demand बढ़ रही है, inflation तो हो रही है, but the economy is also expanding. So yes, the answer is some amount of low stable inflation. At times it can have a benefit, which is expanding economy, but still you have to remember ये harmful effects हैं. Purchasing power will drop, there will be arbitrary distribution of wealth, there will be those other external consequences, but since low stable inflation, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. Next question, explain why unanticipated inflation is often considered more of a problem than anticipated inflation. Again, you will give all of these negative consequences, and as you go along, तो यहाँ पे जैसे point number 2 में you will explain that look, if it is anticipated, so you can make part of your calculations this rate of inflation, so तुम बच जाओगे. Whereas if it's unanticipated, बहुत ज़्यादा arbitrary redistribution होगी, and say therefore harmful effects ज़्यादा होंगे. Menu cost में again you can say कि अगर anticipated inflation है तो you have ways of preparing for it, you have ways of predicting it, and therefore coming up with a regular increase in your price levels. अगर वो unpredictable है तो there will be more confusions, there will be more problems in coming up and deciding your prices, तो menu costs बढ़ जाएंगी. And you can say the same thing about the external consequences. Anticipated है तो you can plan for it, you can maybe think about a business जो बाहर से पाकिस्तानी exports खरीदता है. Now if he knows or he can anticipate a certain amount of inflation, वो पहले से करेंसी लेके रख सकता है, वो पहले से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में he can, वो क्या तुम अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ करते हो, प्री पेमेंट कर सकता है, whatever that word is. So there are a lot of ways in which you can explain the same thing कि ये नुकसान है, एंटिसिपेटेड होंगे तो कम होंगे, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होगी तो यही नुकसान ज़्यादा होंगे. यू डोंट हैव टू कम अप विद अ न्यू आंसर. सेम थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल. And the last question on this particular subtopic, explain why there can be problems for an economy if the internal value of its money is unstable. Now ये यहाँ पे मैंने तुम्हें क्लास में इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के दौरान बताया था कि इन्फ्लेशन इज़ इक्वल टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इट इज़ इक्वल टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी. सो यहाँ पे उसने इन्फ्लेशन का नाम लेने के लिए तुम्हें कह दिया है, कैन देयर बी प्रॉब्लम्स इफ एन इकोनॉमी इफ द इंटरनल वैल्यू ऑफ इट्स मनी इज़ अनस्टेबल, मीनिंग इज़ इट अ प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री if it faces from unstable inflation. So again it will be the same answer. Inflation can have many harmful consequences such as this, all of these 6, and if inflation is unstable, all of these harmful consequences will bite you more. For instance, consequence number 2 will become more serious. If it is unstable, foreigners will be more reluctant to come and invest in your country. And purchasing power wala bhi, I mean, if you don't know kitni inflation, kab kitni inflation, so you don't know how to manage your money, you don't know what to do with it, and therefore the more unstable it is, the more serious these problems become. So don't be put off by the wording. It is the same thing that the examiner expects you to discuss again and again. ये 2 क्वेश्चन हैं domestic versus external consequences पे. Now let me actually read this question. If an economy is experiencing inflation, discuss the view that its government should be more concerned about the external effects than the effects within the domestic economy. So यहाँ से just remember this effect number 5, and let me cover all of it. This effect number 5 is your external consequence. All of the other consequences of inflation, you can explain them as domestic consequences. और आखिर में the explanation of should the government be more concerned about the external or domestic consequences, उसमें remember the size of country's trade. क्या ज़्यादा ट्रेड करती है, कम ट्रेड करती है, that will matter. And other than that, you can think of things like मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मुल्क का जो ट्रेड बैलेंस है एट एनी गिवन टाइम, इफ़ इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इफ़ इट इज़ हेल्दी, तो फिर एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस का इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू आर ऑलरेडी फेसिंग विद एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स सच एज ट्रेड डेफिसिट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो फिर एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द ट्रेड एज पार्ट ऑफ कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स याद रखना. चाइना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री जिसकी एग्रीगेट डिमांड का सबसे बड़ा कंपोनेंट इज़ एन एक्स, बिकॉज इट इज़ एक्सपोर्टिंग टू द एंटायर वर्ल्ड. सो फॉर देम
external sources of inflation are extremely important. A country like USA, for them, the biggest component of aggregate demand is consumption, domestic consumption. So for them, external consequences of inflation not that important. इसी तरह you can think about countries, randomly something comes to my mind. Tourism अगर एक मुल्क में बहुत ज़्यादा है, think of a country where there is a lot of tourism and then there is a lot of inflation. So this is where we are saying tourism बंद हो जाएगा. Tourism से जो export earnings हो रही हैं, that will suffer. So for countries which are heavily dependent on tourism, for them external consequences are obviously very important. Okay, so that is how you will answer this part. External या domestic consequences कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं, that would be 4 marks. 8 marks would be again a repetition of उसकी ऐसे purchasing power गिर जाती है, menu cost होती है, shoe leather cost होती है, and जो हमने 6-7 cost of inflation के रट्टे लगाए हैं. Distinguish between, next question, November 2015, distinguish between the domestic and external consequences of inflation and discuss which are the more damaging to the economy. Exact repetition. June 2013, if an economy is experiencing inflation, discuss the view that its government should be more concerned about the external effects than the domestic. It's the same question. Effect on consumers versus producers. इसमें वही तुमने सारे याद रखने effects और harmful consequences of inflation. Consumer versus producer में सिर्फ ये याद रख लो. और I should ask you this question. जनरल सोचो, थिंक आउटसाइड ऑफ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन. किसको ज़्यादा नुकसान होता है, कंज्यूमर्स को कि प्रोड्यूसर को इन्फ्लेशन को? और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. हु इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड्स? प्रोड्यूसर्स. वाई? सर वो अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं, बट कंज्यूमर्स ने तो कंज्यूम करना ही है एट द एंड ऑफ द डे. प्रोड्यूसर बिजनेस बंद करने से ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ कर सकते हैं? बिफोर यू शट डाउन योर बिजनेस थिंकिंग कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स यू कैन ट्राई बिफोर शटिंग? चेंज कर लें या सेल कर लें या मतलब, लेकिन ये कि वो सेफ है. एनीबडी एल्स? सुफियान, नहीं तुम पहुंच रहे आंसर पे, तुम सीधा ही बिजनेस बंद करने पे आ गए हो. देयर इज समथिंग एल्स यू कैन ट्राई बिफोर यू शट डाउन द बिजनेस. महंगाई हो गई है मुल्क में, यू आर सेलिंग समथिंग, why would you shut down your business? बताओ भी, और कोई मुझे बताए. anything else you can do? just assume you are running a business, कीमतें बढ़ गई हैं, तुम बड़े तंग हो, what can you do? सर जो हम भी अपनी कीमतें बढ़ा देंगे. तुम भी अपनी कीमतें बढ़ा दोगे. so businesses are in a much better position to see off inflation. they pass on the price increases. वो कहते हैं भाई हमारा, दिस इज समथिंग दैट यू ऑल कॉमनली ऑब्जर्व, वो कीमत बढ़ाते हो, कहते हैं जी हमें पीछे से महंगी पड़ रही है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया. सो दैट इज़ वेयर बिजनेसेस कैन बी, यू नो, दे कैन फेयर बेटर इन एन एनवायरनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. आई एम नॉट सेइंग दे आर टोटली सेफ. जाहिर बात है कीमतें बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर्स दे विल रन अवे, बट वी आर सेइंग एटलीस्ट दे हैव समथिंग दैट दे कैन डू. एंड सेकेंडली, समटाइम्स फर्म्स को फ़ायदा हो जाता है उल्टा. थिंक अबाउट अ पेट्रोल पम्प. तुम्हारे पेट्रोल पंप पे क्या होता है, जैसी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कल से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, एवरी पेट्रोल पंप स्टॉप्स सेलिंग. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन, कि कल इन्फ्लेशन होनी है, कल कीमतें बढ़नी है, आई ऑलरेडी हैव स्टॉक दैट आई बॉट एट द प्रीवियस लो प्राइसेस. तो वो उसी वक्त उस स्टॉक को बंद करके बैठ जाते हैं कि ठीक है जब कीमत बढ़ेगी तो हम बेचेंगे. यू सी दैट थिंग हैपनिंग ड्यूरिंग रमज़ान विद योर रूह अफ़ज़ा. रूह अफ़ज़ा पहले बिजनेस वाले लेके पूरे गोदाम भर के दे स्टार्ट स्टोरिंग रूह अफ़ज़ा, एंड दे देन वेट that when Ramzan is closer there will be food inflation, things will become more expensive, this रूह अफ़ज़ा will become more expensive, हम तब बेचेंगे. So producers sometimes actually end up as winners because of inflation. Sometimes consumer हमेशा ही मारा जाता है. I mean, I can't at least think of a way in which consumer can come and say कि I am happy because there is inflation. तो इन क्वेश्चंस में, आई मीन, आई जस्ट अगेन, यार एक आखिरी क्लास के लिए आ जाओ. आई मीन, वी आर एट द एंड ऑफ इट. 2 क्वेश्चंस रह गए डिफ्लेशन वाले, सो लेट्स नॉट जस्ट लीव देम, उसको भी फिर ख़त्म ही कर लेते हैं. एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी. लेट्स जॉइन फॉर वन लास्ट क्लास.
चलो जी, वी हैव लॉस्ट अ कपल ऑफ मोर विकेट्स। एनी हाउ, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन आ गई है? जी सर। ऑलराइट, जी सर। ओके। अच्छा, डिस्कस हाउ रैपिड रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइट अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स विद इन एन इकोनॉमी। मैंने तुम्हें इस पर एक प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड्स पे ले गया हूँ, बट आई मीन परचेजिंग पावर की जहाँ बात करते हो, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज इन माय माइंड व्हेन आई टोल्ड यू के व्हेन यू से कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है एंड देयरफॉर यू नो पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल फॉल, दे विल बी एबल टू परचेज लेस देन बिफोर. This is where I told you that look, if you are a skilled worker, then you are likely to negotiate for a wage increase as price levels increase and you are likely to be successful. So skilled labor पे ये impact कम होगा, but if you are an unskilled labor, तो तुम्हारे जैसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे इकोनॉमी में, you won't be valued and therefore you won't be able to negotiate for a wage increase as easily, so you will suffer more as an unskilled labor or unskilled worker. एंड सिमिलरली अगर तुम पेंशनर हो और तुम फिक्स्ड इनकम पे हो और यू आर ऑन अ सैलरी, then you will suffer more. But as I just explained, if you are a business owner, if you are a firm, then you can increase the price of your products, you can start selling your unsold stock. तो तुम इसी एक पॉइंट से बेताशा निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में. एज आई सेड, वही पॉइंट्स तुमने सोचने हैं कि लुक, दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो जो मैं 2 3 4 रखता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इसी में से यू स्टार्ट वर्किंग आउट कि अच्छा इसका इफेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंज्यूमर या प्रोड्यूसर किस पे हो रहा है. नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे हम कह रहे हैं लेंडर्स लूज इन्फ्लेशन की वजह से एंड बोरोअर्स गेन. सो हेयर अगेन यूज़ योर कॉमन सेंस. वही पॉइंट है, आप कहो इफ़ हाउस होल्ड्स आर बोरोइंग तो फिर कंज्यूमर्स विन because of inflation as borrowers, but firms also borrow to invest and therefore firms can also win as borrowers because of inflation. हम वही पॉइंट एलेबोरेट कर रहे हैं, बोरोअर्स विन. सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन हाउस होल्ड्स और फर्म्स हाउ आर दे डिफरेंटली इफेक्टेड. तो हम कहते हैं बोरोअर्स आर गेनिंग एंड बोथ द हाउस होल्ड एंड फर्म्स दे कैन बी बोरोअर्स. इफ दे आर, दे विल विन. हाउस होल्ड्स ही लोन देते भी हैं. So if there is some household who has given a loan, then as a lender they will lose. So वही point है, you start elaborating upon them. A menu cost, we have been explaining menu cost as the time wasted in coming up with new prices, deciding on new pricing strategy, advertising that, and worsening your relationships between with the consumers. So ये सारी menu costs, obviously if you think about it, तो we are talking about the producers. Menu cost producer को लगनी है, household ने तो नहीं prices और ये menus बनाने सारा दिन. Shoe leather cost, that is applicable to both, whether you are earning money as a firm, whether you are earning money as a household. This shoe leather cost, where you will have to spend effort and waste time in converting whatever you earn into something which is more stable than the money that is losing value in inflation, ये households और firms दोनों पे लगेगी. इसी तरह when you talk about the external effects, कि exports will fall since they become more expensive, obviously सबसे पहले firms will be hit. Okay, so that is where I'm saying वही reasons हैं, उसमें से you have to sort of you know focus on the question. कंज्यूमर प्रोड्यूसर के साथ उसको थोड़ा सा तुम्हें उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा. Now let me not repeat the second one here, it's the exact same question. Let me tell you a few things about deflation. मैंने तुम्हें as a separate sub topic deflation class में नहीं कराई, but I just mentioned it a few times कि जो deflation है, there is a obviously a common misconception if you are talking to a layman, if you're talking with somebody who doesn't